Okay, once again, welcome back. So here we have our model, built-in model, com phase noise here. So as I told you, we have kept the signal to noise ratio high. We don't want any amplitude noise. We have kept phase noise minimum. We don't want any phase noise. So let me run the simulation and see what we get. So when I run this simulation, it will ask for access rights if not given already. So the simulation will run, will complete its simulation time, and then you will see the results. So here we have the constellation diagram of the received signal, and as you can see, because we have kept a high signal to noise ratio, so there is very minimal amplitude noise, and we have also reduced the value of phase noise, so there is very minimal phase noise. And if you see on this screen, none of the symbols basically they go or overlap in the decision regions of the neighboring symbols, and because of this reason, if you see here, the number of symbols received, all of them have been successfully received without any error. So there are 0 errors, and that is why the symbol error rate is 0. At this point, let me introduce another constellation diagram at the transmitter side, just for reference purposes, to see what is being sent. So now I have two constellation diagrams, one at the transmitter side, one at the receiver side. So I will label it transmitter constellation diagram just for reference, and whereas this one is the receiver constellation diagram. So now the first thing you saw, that was the first result. We didn't have much amplitude noise or phase noise, so that is what we get. So now let me change the settings. Let me go and decrease it to 10 dBs. Still your signal is stronger than your noise, but not as strong as in the previous case. So now when I rerun the simulation, okay, there has been an error. Just let me quickly go and see. Oh no, here it is. Look at that. Disastrous. So you know, out of 10,050 or 10,000, yes, probably 10,050 or 10,500 symbols, we have these many symbols in error. So the symbol error rate is this value divided by this value, very high, very high. And if you look at the constellation diagram at the receiver side, it's a mess, total mess, as you can see. So this is amplitude noise introduced in the system, and look at the constellation diagram. How will the receiver know which symbol corresponds to which 8-bit positions? They are all over the place. So that is why there are so many errors. There were so many errors there. And let me go back and change it to 40 again. And then see what happens. For some reason this is not loading correctly, but look at this. This is received, so that was the reference constellation diagram. सोच रहा हूँ कि इसका मसला क्या है, ये सही से काम नहीं कर रहा. कल मैंने वहाँ सिमुलेशन में चलाया तो सही चल रहा था, अभी जो है वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा. मैंने चेंज तो नहीं कर दिया, ये भी ठीक है, एवरीथिंग लुक्स ओके. एनीवेज, लेट्स फॉरगेट इट फॉर द टाइम बीइंग. हमारा जो है काम इससे. सो नाउ लेट मी गो एंड इंक्रीज द फेज नॉइस. ओके, तो मैंने फेज नॉइस इंक्रीज कर दी. सो आई डोंट हैव एम्पलीट्यूड नॉइस, आई हैव फेज नॉइस. एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वो आपको सर्कुलर पैटर्न नज़र आ रहे हैं इसमें, सर्कुलर पैटर्न्स. तो डैट मीन्स कि उनके एम्पलीट्यूड पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है.
बट वो उनके जो फेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं. सो यू कैन सी द मूविंग अराउंड इन सर्कल. तो अपनी जगह छोड़ के वो शायद नेबरिंग सिंबल के डिसीजन रीजन में चला गया. और वंस अगेन है तो काफ़ी मिक्सअप, रिसीवर के लिए बहुत मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना. एंड दैट इज़ वाई once again the symbol error rate is very high. So this is phase noise. So now let me go back and bring it to the value when we will not have much phase noise, to show you once again कि जी अब जो है सिस्टम वापस अपने वहाँ पे आ गया और सिंबल एरर रेट आप देखें तो ज़ीरो है. Now let me have both एम्पलीट्यूड नॉइज़ एंड फेज नॉइज़. तो यहाँ मैं इसको चलो इतना नहीं रखता, 20 रख लेता हूँ, बल्कि 10 ही रख लेता हूँ जो वैल्यू ली थी हमने. और इसको मैं -40 रख लेता हूँ जो वैल्यू ली थी हमने. ठीक है, तो अब दोनों किस्म की नॉइज़ेस शामिल हैं सिस्टम में. अब लेट्स सी व्हाट हैपन्स. वंस अगेन ऑल मेस, बिल्कुल रिसीवर के लिए बहुत मुश्किल है. लुक एट दैट, द सिंबल एरर रेट हैज़ इंक्रीज्ड. अगर ये 1 हो गया तो दैट मीन्स के सारे सिंबल्स एरर में है. तो ये वैल्यू तकरीबन इसको अप्रोच कर गई है, ये वैल्यू. तो ये जो है 10,050 और ये प्रॉब्ली 10,500 है. अगर मैं, चूँकि इसमें अब अब्रीविएशन यूज़ हुई भी है, बहरहाल आप इस रेशो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा. सो वेरी हाई. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव बोथ टाइप्स ऑफ नॉइज़, फेज नॉइज़ एज वेल एज एम्पलीट्यूड नॉइज़. अब आप यहाँ पे डिफरेंट मॉडुलेशंस भी ट्राई कर सकते हैं. अब आप करेंगे लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप, यू विल एनालाइज डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यू विल कंपेयर डिफरेंट मॉडुलेशन विद ईच अदर टू सी कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है. ठीक है, सो दीज आर ऑल डिफरेंट. ये एक इंट्रो सा था, एक बिल्ट इन मॉडल लेके हमने एनालाइज किया है द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन अ वेरी एडवांस मॉडुलेशन स्कीम. 256 QM बहुत ही एडवांस मॉडुलेशन स्कीम है. ठीक है, और इसका जो है इस तक पहुँचना, इसके लिए ऐसा SNR रखना कि उसमें कोई एरर्स ना आए, ये बहुत मुश्किल है. आपको काफ़ी हाई SNR चाहिए. ठीक है, आप देखें सिस्टम बिल्कुल ठीक है. सो दिस वाज एन इंट्रो टू एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़. एंड वी हैव यूज्ड सिम्बलिंक. उस पर अब आप मज़ीद एक्सरसाइजेज और एक्सपेरिमेंट्स और लैब्स करेंगे, आपको लैब टास्क भी मिलेंगे इसके. सो दैट वाज द इंट्रो. तो उस वीडियो में जो चीज़ मिस हो गई थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी आपके लिए.